Good evening, ladies and gentlemen. I'm your host for the day, Vikas Mahara, and I welcome you all to our open mic live session, Avaz, presented by My Story Trust. Okay, so now we'll present you a small video prepared by our trust so that you'll get to have an idea about what topic we are going to discuss today. मैं डर गई थी बाबा, यूं डर गई थी। मैं डर गई थी बाबा, यूं डर गई थी। उस लम्हे में जिंदा होकर भी मर गई थी मैं, डर गई थी। अंग अंग को मेरे जब सना था उसने, अंग अंग को मेरे जब सना था उसने, घिन से, नफरत से मैं भर गई थी, मैं डर गई थी। हम जैसा ही रंग रूप, हम जैसा ही वो दिखता था। हम जैसा ही रंग रूप, हम जैसा ही वो दिखता था। अनजान थी ईमान उसका हर शरीर पर बिकता था। हम जैसा ही रंग रूप, हम जैसा ही वो दिखता था। अनजान थी ईमान उसका हर शरीर पर बिकता था। सरल भाव, मीठी बोली, बाबा तुमसा वो लगता था। सरल भाव, मीठी बोली, बाबा तुमसा वो लगता था, पर अलग था। लड़की को देख शरीर उसका सुलगता था। उसके नापाक इरादों को मैं परख न पाई थी। नापाक इरादों को मैं परख न पाई थी। मैं समझ न पाई थी बाबा, बस समझ न पाई थी। Alright, so all of you might have got the idea about the topic for today, which is child molestation. But before beginning with the topic, I would like to introduce you all about what my story is. And I want to ask from everyone that I'm audible to you now. Am I audible? Yes, Okay. Yes. yes, So, my story, as the name suggests, मेरी कहानी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर स्टोरी को सुना जाता है, हर स्टोरी को मैटर दी जाती है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड वी ट्राई कि हर एक स्टोरी को एक बेटर क्लाइमैक्स दे सके। लेकिन अगर हम एक बेटर क्लाइमैक्स नहीं दे पाते, देन वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस स्टोरी को एक बहुत अच्छा इंटरवल दें। सो दिस इज ऑल अबाउट माय स्टोरी, which is a platform where आप अपनी कहानियां शेयर कर सकते हो, either it's related to depression, anxiety, molestation, abuse or anything. We have a solution for all of you and we try our best कि हम आपको एक right path की तरफ ले जा सकें. Okay, so now we'll discuss about the topic for today, which is going to be child molestation. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। एक छोटा सा बच्चा जिसको थोड़ी सी भी समझ होती है, वो भी ये सोच के बैठ जाता है यार कि यार माँ बाप तो मारेंगे, मैं गलती करूंगा तो मैं तो पिटूंगा, चाटे पड़ेंगे, मतलब इट्स लाइक बच्चे कहीं ना कहीं इस पेन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का एक और मेजर रीजन ये है, पीटीआई ने अभी एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर जब लॉकडाउन हुआ था 20 से 31 मार्च तक चाइल्ड हेल्पलाइन पे 90,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सो इट्स लाइक अ ह्यूज नंबर, 90,000 केसेस फ्रॉम 20 टू 31 मार्च, लॉकडाउन की वजह से। एंड नॉट जस्ट अबाउट चाइल्ड अब्यूज, उसके साथ भी कई सारे अब्यूज हुए थे जिसके अंदर sexual abuse with women and बहुत सारे ऐसे topics है, but our topic for today is child molestation. So now I would like to request my co-anchor Ms. Jyotsna ma'am to introduce all our guests for the today. बोलो। ऑलरेडी बोल चुके हैं, देखो बोल। म्यूट अनम्यूट कर इसको। स्टार्ट स्टार्ट कर। बोल चुके हैं, देखो बोलने के लिए। इंट्रोड्यूस। Jyotsna ma'am, hello, am I audible to you? Yes ma'am, you're audible. Hello, ma'am, you are audible. Just या try to speak a you're bit audible, louder. बोल रहे हैं। Okay. So I may invite now Dr. Namita Rajput. Namita. You are not audible now. Hello. Hello. या you're audible. I'm audible? Yes ma'am, you're audible. Yes.
Okay. बोलती जाना तू. Dr. Namita Rajput, may I invite Dr. Namita Rajput? Dr. Namita Rajput has served as the principal at Sri Aurobindo College, University of Delhi. She holds great experience in teaching for almost 27 years. She has also contributed towards research and social welfare. Personality with everything Live experience. TV में. So now I may invite Dr. Namita Rajput. Question पूछ. We are pleased to have you here. Question. Yeah, thank you very much for inviting me on the show. My story. The initiative is actually commendable, and the topic is. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So the topic you have chosen is very, very pertinent, very, very important, and relates to the very important section of the society, that is children. And if the children of any country are molested and they don't know about their rights to protect, there are no statutes and laws which are there to conserve them or to protect them, then that country is actually in a very bad state of affairs. So I'm actually very, very happy to be in the show. And with my experience that I'm running two NGOs, I'm the president of Anhad Foundation, and I'm a managing trustee of Sam Education Trust. Our NGO also takes care of the child, child related issues, and we have a special wing called Khushi, which they take care of 3C development of the children and about the women development and other issues. So aspects relating to the child abuse, the rape cases, the minority issues, and especially we have visited many orphanages wherein the stories are so bad that if you come to know and you're not able to help, you are actually feeling helpless. So whatever questions you have, I'll be very, very happy to answer relating to my experience and relating to my knowledge. So basically, the legal framework and the other aspects relating to the child molestation and other things, they are very, very erroneous acts, and they are very, very bad acts. So we have, every day coming in the newspaper that the child is molested, the 5-year girl is raped, there's a gang rape. So, these kind of stories, they are popping up every day, and they are spreading, and people are very, very, they are unaware. Some people are into this bad acts. So we have to actually stop them, and the NGOs like My Story and the other NGOs who are into this, I think if we join hands together, we can end this kind of a crime, which is very, very bad. Because we have a right of natural justice. The children have a natural right of justice to live peacefully in this world, and which is free from all corruption, which is free from all rape and other related issues. So with these words, I give the mic to the host so that they can ask the questions, and I will be very, very happy to answer. Over to Jyotsna. Good evening, ma'am. Thank you so much. So let's start. My first question is the legal process the victim has to go through the attain justice. Do you think it's fair and upright? So I'll be giving you this answer. The legal framework in terms of the sanctions and the penalties in our country has been dynamic in nature. It will not be wrong to say that the process of getting justice is very, very tedious, but not to question its fairness, rightness, and sanctity in harsh. And the lawmakers, that is our legislative body, has constantly tried to amend the penal code to accommodate the crimes and establish the tailor-made statutes to countervail the evils of the society. I feel that the legal path is fair, it is upright, true for the time it takes, but again, that is a separate issue. So overall, we can conclude this particular question is that aspects are there in place, they are in time, but to get the natural justice, it is taking time. So that is a separate issue, because we cannot just have anything in decision unless and until we are sure about the problem. So I think the whole legal framework is right, and they are there in place, but the only issue is the timing. Next question. Ma'am, if you see that
child monsters are obviously sick sick in in mind. minds. So when they are They are taught taught when there when is a there is a trial child, where a a full-grown full-grown man is man is against a a child child instead of instead of sending sending him, him her her straight straight a psychic psychic god god for for a a help. help. What's What's your your call call on on this? this? Okay. So basically, when you talk about not just sending the molester to the courts or to the other aspects, why the trials are necessary? I'm going to focus on this. The trial is a matter of principle of natural justice. That is the ODI alternate pattern, which means we listen to the other side also. No matter how heinous and gladsome the crime may be, everyone deserves the right to a fair trial. The prestigious judiciary of our country is very competent enough to take the measures to check if the accused is within and outside the purview of reformation. But yes, I do feel the new reforms should come and the lawmakers should be in a tandem in collusion with the specialists. So the new laws are no redundant and cater to the need against the societal evils of the child molestation. So basically, we cannot avoid the trials because it is a right of natural justice, and we have to give to how heinous the act is. So, All ma'am, right, what do you ma'am. think sex? Yes, ma'am, speak. Third. Yeah, ma'am. So what do you think sex education at a very early age corrupts a child mind or give him the power of understanding things? Do you Do you think think education education systems systems should should? include sex education as at a high time? Now, basically, in my opinion, the awareness is the biggest fortune for mankind. To aware is something which comes as a matter of right. Now, coming on to the sex education, I feel that earlier it comes, the better it is. It is very important to break the ice when the children, as they are at a delicate age, so that every necessary, it is very necessary and pertinent to be very prudent at this age. Again, be unequivalent about the nuances of sex education. It will halt a lot of problems which are usually attacked by unawareness, and forewarned is forearmed. So forewarned is forearmed is my conclusion. That is, the sex education to the children should be given at a very tender age because that is the time when you can imprint in their mind that these particular acts are wrong. So the better it is, the education, it is good for the society at large. Totally agree with you, ma'am, that sex education should be given at such a tender age so that children become aware about it. Because I remember this thing, मैं आपको अपनी life का एक instance बताऊंगा. We were in class 8. Production, productivity से related एक chapter आता है and every student in the class were like, oh bro, we have to read this एकदम से chapter. We prompt have बोला to. करो. Don't wait. Hello, hello. Am I audible to you all? Yes. Okay, Yes. so we all were excited about reading that particular chapter. Okay, so it was related to production in human beings. So we all were excited. Yes, bro, ये सारी चीजें पता चलेंगी because हम हमारा mind में थोड़ी age से distorted होता आता है. I would say that uh, इंटरनेट भी जो हमारे यहाँ पे पॉन का आना है दैट इज अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय अस क्योंकि कहीं ना कहीं आई टू फील दैट पॉन कहीं ना कहीं रेप कल्चर को प्रमोट करता है एंड उस समय पे हमारी थिंकिंग इतनी ज्यादा डाइवर्ट हो गई थी कि हमें उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारी थिंकिंग जो एक्चुअल होनी चाहिए थी वो नहीं थी सो आवर समय फील की सेक्स एजुकेशन इंस्टेड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन एट एज ऑफ 14-15 उससे भी पहले देना चाहिए ताकि बच्चे को पता चलो क्या राइट पार्ट है क्या रॉन्ग पार्ट है बिकॉज आई फील लाइक कि हम एक फीमेल की पोजीशन पे आके ये चीजें नहीं समझ पाते कि हाउ मच पेन शी गोज थ्रू वी ऑल थिंक दैट यार वो सेंसिटिव पार्ट है बहुत हमने नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रखी होती है सो यही आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू कि सेक्स एजुकेशन को बहुत छोटी एज में बच्चों को देना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर नॉलेज हो कि यार नहीं दैट्स द रॉन्ग पार्ट दैट्स द राइट पार्ट एंड दे शुड हैव प्रॉपर नॉलेज और बचपन में भी जब बच्चे खेल रहे होते हैं they do hit each other girls and boys they do hit each other at wrong place and I think so that is something which needs to be taught of. Okay, so we can continue with our next question for today and that is Dr. Namita, I would like to ask you in cases of dowry with violence immediate arrest किया जाता है but when it comes to child molestation immediate arrest क्यों नहीं होते हैं so इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? Hello, you are not audible to us. Basically,
getting into the legislative obscurity of the provisions, I feel there is a need to understand the intent of the legislature and basically the intent of doing a particular act. तो अगर इस तरह की कोई भी वारदात या घटना होती है तो हमें एकदम से मोलेस्टर को जेल में या एकदम से उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहिए, हमें सारे सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए, क्योंकि हम गलत आदमी को सजा नहीं दे सकते। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो unless and until we got into deep into or dive into the real circumstances, मेरे हिसाब से एकदम से एक्शन लेना ठीक नहीं है। नेचुरल जस्टिस इसीलिए है कि हर एक को एक चांस मिलना चाहिए बताने का, सोचने का, करने का कि ये एक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या इंटेंशन थी, उसके पीछे और साथ में कोई लोग थे या नहीं थे। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करे बिना से एकदम से अरेस्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं भी है। मे बी यू कैन कीप एन आई on the person who did it, but yes, immediately getting him arrested is आप तब तक किसी को मतलब एक गलत वर्ड्स यूज नहीं कर सकते जब तक वो प्रूव नहीं हो। तो प्रूव करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारी एनजीओ कीर्तिनगर के स्लम्स में काम करती है। तो कीर्तिनगर के स्लम्स में हमें इस तरह की घटनाएं बहुत सुनने को मिली। हम लोग जैसे वीकेंड पे बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं, तो हमने वीकेंड पे एक लड़की है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, पेरेंट्स का नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनका इतना स्टेचर नहीं है कि वो इस चीज को ओपनली सह सके। पर मैं आपको उसका नुआंस और उसका क्रक्स बताना यहाँ पे बहुत जरूरी समझती हूँ। उनको सब कुछ पता था कि रात को बिकॉज वो सब झुग्गी में रहते हैं, उनके झुग्गी में कोई आया, उनकी छोटी बेटी को लेकर चला गया और सुबह 5 बजे उसको छोड़ गया रेप कर कर। द चाइल्ड वॉज इन डीप पेन, शी वॉज इन डीप ट्रबल। और जब हम लोग 9 या 10 बजे पहुंचे, द गर्ल वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड इट वॉज प्रूव दैट इट वॉज अ गैंग रेप। एंड पेरेंट्स को सब कुछ पता भी था, तब भी वो एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास वो प्रूव करने का तरीका नहीं था कि। और इतनी चीजों को हम एक तरह से सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते जब तक बहुत सारी एनजीओज इस चीज में एक्टिव नहीं हो जाती है। अगर हमें इस चीज का पता लगा, हमने पता भी करने की कोशिश की, बट हमारा एक ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था कि वो बंदा वहां से वो झुग्गी छोड़कर कहाँ चला गया, किसी का भी उसका हमें पता नहीं मिला। नहीं तो हमारी एनजीओ ने प्रॉमिस किया था उसको कि हम इसको सॉल्व करेंगे एंड जो भी जितने भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स करी हैं हम उसको जरूर अरेस्ट करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज वाज दैट कि वो वहां से चला गया, भाग गया और किसी ने भी उसका हमें पता नहीं दिया। आज तक वो लापता ही है। तो एकदम से हम अरेस्ट करने का तो बहुत ही आप भूल जाइए, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं और हमें जब तक चीजों का पूरी तरह से पता नहीं चलता हम एक्शन नहीं ले सकते और नहीं लेना भी चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। मे बी मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है जब तक चीजें प्रूव नहीं हो जाती, सर्कमस्टांसेस हमें नहीं पता लगते, हम किसी को भी दोषी नहीं कह सकते। टोटली एग्री विद यू मैम। मेरे साथ भी एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ था। मैं मैकेनिक के पास गया हुआ था मेरे स्कूटी ठीक कराने के लिए। सो उस मैकेनिक ने अपने साथ एक छोटा बच्चा रखा हुआ था, समवेयर अराउंड होगा 12-13 ईयर्स का। ओके, सो वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, उसको अच्छे से खिला रहा था, बट उससे एक गलती हो गई, उसने ना उसे खिंचा के चाटा मारा है। एंड मेरे सामने की ये बात है। मेरे को उस समय वो इंसिडेंस देख के मैंने उसके मुंह पे बोला कि भाई तुम उसको हाथ कैसे उठा सकते हो तुम उसके ऊपर। बट कहीं ना कहीं उसने मेरे को फिर बोला कि भैया ये लोग सीखते हैं ऐसे ही है, हमारे माँ बाप ने भी हमें मार मार के सिखाया है। ऐसे तो कहीं ना कहीं लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो भी यही हो गया कि बंदा अगर एक चाटा खा के ज्यादा अच्छा सीखेगा बिना चाटा खाए। कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस ये हो गया कि मार का जो असर है वो बिना मार के उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो उस समय पे मैं भी खुद इस थॉट प्रोसेस में था कि एक पॉइंट पे वो उसको इतने अच्छे से संभाल रहा है, उसको खिला पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट दूसरे पॉइंट पे ही इज हिटिंग हिम। तो मैं जज नहीं कर पाया उस चीज को। तो बिल्कुल मेरे को इस पॉइंट के ऊपर आपका सही लगा कि हम किसी की इंटेंशन जब तक हमें अच्छे से पता नहीं चलती, इमीडिएट एक्शन नहीं लेना चाहिए। हेलो Jyotsna ma'am, you can Yes. continue with the next question. Jyotsna ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. One last question. Yeah. Ma'am, what do you think? Is it psychological illness or something else? I will give my opinion on this. I will give my opinion You know, on this. sometimes
it will not be wrong to construe that sometimes the aftermath of a mishappening perpetuate and tend to stick along for a real long time. It is a true that some instances leave a deep scar on the mental psyche of the child, but it is also true that child and the behavioral psychology and its science has evolved and has canvassed out the ways in which the clutches of the deep dug bad memory can be made free from the uncomfortable shackles. People have started to become more aware of the child psychological issues and the mental health, and as a general concept, and it's very nice to see that people have come out empathic towards it. I feel the government and the NGOs should also perpetuate and measures in the awareness of the mental health and child psychology and reduce the inertia of the stigma attached to it instead of who are suffering from the traumatizing past across the nation. So I would like to tell here that Jyotsna has asked me a question that whether it is a psychological issue or not about the child and about the of the person who did it. So I will be mentioning and addressing both the sides. Definitely, the person who is doing it, such a erroneous act, is definitely a person who's suffering from some kind of a mental illness. We know from the childhood that these kind of acts are not good for the society, for upholding the spirit of the society. And if you have a strong urge of all these things and getting a child into it and getting the pleasure out of it, definitely it is a psychic case, it is a mental disorder case. And of course it can be corrected, it can be taken care of, and there is a big issues relating to it. And when you come onto the victim, the victim is about a rape case of a child, and of course a girl child. So, we have come across so many rape victims that they have such a bad memory in their mind that throughout their life they have a very deep impact. They are not able to come out of it. They are not able to uphold this. They always feel that they're different from the rest of the world. So we have to help that particular child to fade off his bad memory of the rape which has happened to her, and come out and give her the most strength and all the securities, because this is not the end of the world. If something has gone down or something has been wrongly done to a girl child, this definitely cannot be undone. But yes, we can do something about the psychological issues which are at the center of the crime. And we have to do kind of a self-awareness programs. We have to do a self-defense program so that these particular acts and these particular problems can be, substantially reduced. And to my knowledge, the role can be played by all of us together. A collective effort in this regard will definitely make a lot of significant difference. Totally agreed. If I move on Well to said. Jyotsna, please, for the next question. Would like to share 2-3 more stories. If the time permits, I would be sharing few more stories, but let other speakers now come in, and I am here in the program, and later I'll speak about few stories. Good afternoon, ma'am. Shruti Sharma. श्रुति मैम, Ma'am, आपका I'm माइक audible? म्यूट हो रखा है. ओके. Yeah. Yeah, Shruti ma'am. Shruti ma'am, now I'm audible? Hi. Yeah. Hello, ma'am. Yeah, you're So, audible. Hi. Shruti ma'am is all about. Hello. Yeah, please go on. Shruti ma'am. Yeah. Miss Shruti Sharma, after finishing her master's degree in journalism and mass communication, a holder of extensive experience of more than 5 years in the field of academics, corporate communication, and freelance writer. So, ma'am, welcome you from My Story. Thank you so much. It's a it's an honor for me to be a part of My Story. It's a great platform and a great initiative taken by you all and your team, because the topic, which is a very sensitive and important topic to discuss, because the knowledge is very less regard to
child molestation. People actually don't know about it, and if people know about it, they are not ready to discuss about it. So I am thankful to you all. We are pleased to have you here, ma'am. Thank you. Okay, so Jyotsna ma'am, begin with the questions for Shruti ma'am. Yeah, just a second, just a moment, ma'am. Yeah. Yeah, Shruti ma'am, do you think orthodoxy accelerate all this? Definitely. People are who are orthodox are basically, related to their culture. They have certain kind of beliefs, like cultural challenges they have. Every culture has a few rules that are maybe spoken or unspoken about, sex or sexuality. So these rules are Okay. basically, make it more difficult for children to ask for help when they have been abused. So if I give you an example, in a culture like where the value of female virginity is very high, a girl who has been sexually abused, she can she may feel that she has been disgraced, or maybe of no use, nobody would marry me. So these kind of questions would come across her mind. So this is a Agree. kind of feeling she must be having, and it in turn lead to further secrecy. She would not further tell out to her parents like what is going on in her life or so. Same is the case with boys. Boys who have been sexually abused, they may experience shame, they can feel self doubt. Even if I talk about, they can have this feeling of having commonly held misconception that maybe that makes them a gay. If someone a boy is abused by a guy, so he can feel the same way. So I understand the cultural beliefs are very important, but it is very necessary to focus on the physical and the emotional health of your child. So you have to remember that sexual abuse is not your fault. Who has been abused, you have to make them realize that it is not their fault, and does not make but does not reflect the negativity on the family or you as a parent. So anybody can seek guidance from the people in your community, or a kind of trust, or maybe any kind of healthcare practitioner you can talk to, who are supportive enough these days. So, Okay, ma'am. ma'am, what we can do to save the mental health of the victims? Pardon? What we can do to save the mental health of victims? Yeah, right. That is a very important question. Right, ma'am. Once a child is abused, it gives a kind of trauma to that child. uh, Person is maybe traumatized in a way he or she is not able to express, talk, maybe having a fear in their mind. So in case they tell their parent or a person close to them what they have to do, this is a kind of reaction from the parent or a family member. After this disclosure from the child, this will give a big effect on the child, that how your child deals with the trauma of sexual abuse. So what parents can do, they have to be very much supportive. First of all, they have to be calm. Hearing that your child has been abused can bring up powerful emotions. Exactly, that will come up this way. Totally, ma'am. Because आप हाँ राइट, आप ऐसी चीज सुनेंगे, यू विल एंड अप लाइक एक टेंशन आएगी, एंजाइटी आएगी कि लाइक ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, बच्चे ने बताया तो सही, बट आप उसको you should not blame your child in that case. So it will be difficult for your child to disclose किया है, तो in that way you have to be very much supportive. You have to stay calm in a way. You cannot blame your child, you have to believe your child and let your child know that he or she is not to blame for what has happened.
in turn you have to praise your child for being, brave, for telling about sexual abuse. That is the, two things you have to do. First is you have to stay calm, then you have to believe your child, and the third point, I would say, you have to protect your child, by getting him or her away from the abuser, or immediately you have to report to the authorities, or seeking guidance from, the health practitioner. That is very important. Okay, ma'am. So I have a point of view on this, and I would like to ask this from all of the guests. ठीक है, यहाँ पे Yeah. जितने भी गेस्ट हैं, मेरे को सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना. I might be wrong in this, but I think कि अगर सेक्स को टैबू और ज्यादा कंसीडर ना किया जाए, तो जो विक्टिम्स इन सारी जो बच्चे इन सारी चीजों से गुजरते हैं, जो जो इन चीजों को फेस करते हैं, ऑब्वियसली सेक्स अब्यूज इज अ हाइनेस क्राइम. वी कैन नॉट इग्नोर दैट. बट अगर सेक्स को टैबू ही ना आगे से कंसीडर किया जाए इंडियन सोसाइटी के अंदर एनीमोर, तो वो बच्चे को रिकवर करना तो आसान होगा. डोंट यू गाइस थिंक सो कि अगर सेक्स को टैबू और ज्यादा कंसीडर नहीं किया जा रहा, देन रिकवर करने में वो आसान है. क्योंकि इट्स लाइक बच्चे फील करते हैं कि वी आर एक्सपोज टू द सोसाइटी, आर पार्ट्स वर एक्सपोज टू द सोसाइटी, एंड सेक्स इतना गलत चीज है, हम लोगों का हर न्यूज के अंदर वो बोला जा रहा है. तो अगर सेक्स को टैबू ही नहीं कंसीडर किया जाएगा, सो डोंट यू ऑल थिंक सो कि किसी को रिकवर करने में बहुत हेल्प होगी. यस एग्जैक्टली, आई थिंक सो. अगर ये बात ही बच्चे के माइंड से निकाल दी जाए फ्रॉम द इनिशियल लेवल, Yes. बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए, वन वन नीड्स टू टीच देम. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू टीच देम द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट. This is the main problem in Totally. our society. We are not discussing at all. हम बोलते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, हम उसको नाम नहीं देते हैं. Why? We are only shaming to name. हम ही शेम करेंगे, बच्चा हमसे ही सीखेगा. अगर हम ही Obviously. उससे खुद ही बात नाम से बोलना चाहते. एग्जैक्टली. तो जब हम ही उनसे बात करके सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो ईच एंड एवरीथिंग. आपने देखा होगा, इवन आई हैव अ सन हु इज माय सन हु इज 6 years old. He is very much curious to know many things, like the body is growing up, body में several parts changing day by day. तो ये कैसे होता है, ऐसा क्यों हुआ मम्मा, ऐसा क्यों हो रहा है. तो दीज आर द क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर देम प्रॉपरली इन अ प्रॉपर वे, नॉट इन अ वे लाइक बाद में बताएंगे, मे बी बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ इज द टाइम, यू हैव टू टेल देम नाउ, नॉट टुमारो. देयर इज नो टुमारो. टुमारो विल बी वेरी लेट. Totally agreed with you, ma'am. Well said, very well said. And I would like to ask from our other guests too, Ms. Akansha and Ms. Nufrani, what are your views on this? See, what I believe is that So I as a completely teacher, agree. Sorry. as a Okay. teacher, what I believe in the class is that Yeah, sometimes continue, the continue. teachers shy away a little from answering the questions the children sometimes put up. What we feel is that no, you're not supposed to ask these questions from us. So then, who is going to answer all these curious questions? They'll go, they'll search this outside, they'll discuss amongst themselves, and might be there will not be a proper counseling and talking about it. So wherever such a topic comes up, we should never shy away. We should like try to decipher it in front of them in the most easy way, manner in which they're able to understand it, comprehend it, and they no longer feel very bad about it or very curious about it anymore. So as a young teacher, this is what I do in the class. If even if they ask a question that might be I would have never had the guts to ask my teachers in my school days, I still put my chin up and try to answer them in whatever way it is possible for me. Thanks a lot, ma'am, for this. And I would like to tell you about Devyani ma'am a bit. Okay, so she's an English teacher residing in Dehradun. She is a reader, writer, and a devoted animal lover. She's passionate about writing and likes to bring lesser known issues to light. She has helped us in this crisis of COVID-19 to serve the underprivileged through her monetary donations. She has helped in feeding several families. So, thanks a lot for sharing your views with us, Devyani ma'am. And now I'd like to ask Miss Akansha that what are your views on this topic? So yes, I completely agree with Shruti what she said, that it's important to share with your children the age appropriate information,
or in a very simple language and talk about it. And so, because in my experience, I've seen, I'm working in an NGO, I'm working with children, so I do see when we speak about it, we give them the appropriate knowledge, and that does help them to come forward and identify what is right, what is wrong, what is safe, what is unsafe, and they are comfortable speaking about it. So giving that platform, and I think we need to stop shying away from this topic. And it's okay, sometimes you do not have the appropriate knowledge for it to share, but telling the child that right now I'm not aware is also okay, and saying that I will get back to you, but not avoid the topic completely. So I think, like you also said, Vikas, if it's not considered a taboo, things would be much, much better. Okay, thanks a lot for sharing your views, and I'd like to tell you a bit about Akansha ma'am. Okay, so she's a program manager of Tara Child Protection and Empowerment, and she has pursued her master's degree in social work from Delhi University and working with Tara since 2014. So, ma'am, we love your views on this, and now I'd like to ask Jyotsna ma'am to ask questions from our guest. So, ma'am, next question: what measures do you think parents should take to avoid this? आई थिंक पेरेंट्स की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए मैम इस चीज में कि वो ऐसी चीज होने से पहले ही पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज के बारे में बताए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच. एग्जैक्टली आजकल हमने देखा भी है, मेनी ऑफ द कैंपेन्स आर रनिंग लाइक व्हाट इज अ गुड टच, बैड टच, क्या ओके टच है, क्या ओके नहीं है. तो उसी के लिए सबसे पहले यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन द एक्यूरेट नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वन थिंग. देन यू हैव टू अवॉइड फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन स्ट्रेंजर डेंजर, because mere hisab se, according to me and many of you will agree to this, that the people the children are abused by someone they know and trust. ये ज्यादातर होता है, स्ट्रेंजर से तो कम होगा लेकिन अपने लोगों से ही ज्यादा है. तो हम बोलते हैं ना, वी आर इन होम एंड वी आर सेफ. दैट इज नॉट ट्रू. आपको अपने घर से ही ज्यादा खतरा है. So you have to just avoid focusing on exclusively saying stranger danger. You have to teach them कि कौन उन्हें touch कर सकता है, कौन नहीं. And specifically you have to let your children know that they have the right to make decisions about their bodies. They are empower. You have to make them empower enough to say no when they are not want to be touched, इवन इन नॉन सेक्सुअल वे. अगर वो चाहते हैं कि आप उन्हें हक करना चाहते हैं, मे बी नॉट फादर और मदर, मे बी सम अदर फ्रॉम द फैमिली, तो अगर आप उन्हें हक कर रहे हैं, यू वांट टू किस देम, तो बच्चे को ये राइट होना चाहिए. यू शुड मेक देम एम्पावर. ऐसा नहीं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, जाओ किस करो, हक करो. नो, you cannot do this. You have to make them empower and give them this kind of decision to say no whatever they feel. Maybe they are not comfortable enough, that's why they are not going. Agar wo shy feel kare, that's okay, let them feel shy. So my point is, you have to teach them their body safety, what is okay and what is not okay, right? Good and bad touch. Then you have to teach your children to take care of their body parts. Private parts unko zaruri nahi hai, you always have to help them. आप उनको हमेशा जाए वॉशरूम में एंड द टॉयलेट्स, यू आर ऑलवेज accompanying them at a bigger age. If they are going and doing everything on their own, let them do. हमेशा वो किसी पर rely करेंगे तो that would be a problem, that will exacerbate the problem, right? So you have to educate your children, and more importantly you have to make the difference between the good secrets and the bad secrets. You have to teach your children, like good secret can be there is a surprise party, maybe they are planning something, there is a surprise gift they bought. वो चीज, ये secrets ऐसे हैं, they will come before your eyes, after some days, few hours, आ जाएंगे आपके सामने. These are the good secrets. But bad secrets are the ones though that the children is supposed to keep secret forever. वो आपको कभी बताएगा ही नहीं, which is not okay. So you have to make this difference कि आपको secret नहीं रखना है. Maybe family में एक बंदा हो जिसको आप वो secrets बताएं,
good, bad, whatever it is. So you have to educate your children, and you have to trust your instincts. This is for parents. आपकी instincts आपको क्या कहती हैं? If you are leaving your child to your maid or maybe someone's family member, किसी के घर में कहीं पर अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, and you're feeling somewhat uneasy to leaving your child with someone, don't do it. If you are Alright. concerned about possible sexual abuse, you have to ask questions. आपको पूछना पड़ेगा अगर कुछ भी आपको इशू है. Ask the practitioners, ask the community, to whomsoever you trust. So this is the best time to talk to your child, and the time is now. ऑलराइट मैम, सो कहीं ना कहीं हम लोग एक पॉइंट पे आके कंक्लूड करते हैं, जैसे कि नमिता मैम ने कहा था कि सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टू गिवन एट अ वेरी यंग एज. ओके, सो हम इस टॉपिक पे आगे कंक्लूड करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेंशन दैट ऑडियंस इज गिविंग वेरी गुड रिस्पांस ऑन दिस वेबिनार, सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन. एंड आप अपने क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देंगे. एंड उसके साथ अभी जैसे श्रुति मैम ने बोला कि सबसे ज्यादा ऐसे केसेस हमारी फैमिली में ही होते हैं, हमारे अपने ही करते हैं. बट मैं इसके ऊपर एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा. मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ओके, आई वॉन्ट से हर नेम. शी फेल्ट लाइक शी वाज अब्यूज्ड बाय हर फादर. शी रियली फेल्ट लाइक दैट. ओके, सो बट शी वाज लाइक कि मैं कैसे इस चीज को किसी को बोलूं, बिकॉज शी वाज नॉट श्योर अबाउट इट. बट शी फेल्ट इट कि हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे फादर ने मेरे को गलत पॉइंट्स पे टच करने की कोशिश करी है. एंड शी वाज नॉट एबल टू टेल दिस होल इंसिडेंट टू हर मदर, either to her brother, और वो किसी को बोल नहीं पा रही थी. She eventually told about an incident to me, and I was like कि मैं कुछ कर नहीं सकता था उसके ऊपर. So मैं उसके ऊपर पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि don't you think so कि फैमिली वाले अगर कुछ करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? Right. This is the cultural challenge we have in front of us. जब हम बात करते हैं अपने कल्चर की कि नहीं ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, या घर में कोई भी ऐसे लोग हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट देम. ठीक है, आप रिस्पेक्ट करो, लेकिन यू हैव टू बिलीव योर चाइल्ड. जब तक आप उसकी बात सुनोगे नहीं, आप उसको बिलीव नहीं करोगे, तो अभी उसने एक बात बताई छोटी सी, कल को वो दूसरी बताने से भी कतराएगा, बिकॉज यू आर नॉट बिलीविंग हिम और हर. तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फादर के मतलब फादर के थ्रू जैसा आपने बताया ये इंसिडेंट हुआ है ऐसा, तो वो मदर को अगर बच्चा बता रहा है तो मदर माइट नॉट बिलीव कि क्या बोल रहा है, राइट? क्या बोल रही है, मतलब दिस कैन नॉट हैपन. उसकी बात को सुनने तो सही ना कि वो बोलना क्या चाहता है या बोलना क्या चाहती है. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों को तो हम एजुकेट करें. ये जो प्रोग्राम आपने किया है, दिस इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज. इससे पेरेंट्स भी एजुकेट होने चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स एजुकेट होंगे, एग्जैक्टली, तभी बच्चे एजुकेट होंगे. आगे आप फर्दर उनको एजुकेशन कैसे दोगे अनटिल एंड अनलेस यू आर योरसेल्फ एजुकेटेड. आपको तो पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं. आप किस एज में रह रहे हो. यू आर इन इंडिया, वी आर इन अ सोसाइटी जहां हर चीज के लिए यू फील शाय. ऐसा नहीं करो, मतलब इससे हमारी इज्जत कम हो जाएगी. वी फील इंसल्टेड, और इन सब चीजों की वजह से ही हमारी सोसाइटी में ये चीजें और ज्यादा एग्जैजर्बेट हो रही हैं. सो वी हैव टू one more thing I would like to Yes, add is Pranava. that whenever the parents have to make a choice कि हमें अपनी fragile reputation बचानी है या अपने बच्चे का fragile mind बचाना है, so they should choose the latter. Because I've seen cases where I'd like to put this across that once a child goes through a sexual abuse, the girls when they grow up, either they become too casual about sex, or the second scenario is they become too speculative when it comes to relationships. They don't understand whether it is good, whether it is bad. Some become very normal about it, that okay ठीक है यार अभी भी इतनी young age पे हुआ तो it is fine even now if we are doing it. So there is no emotion connected to the physical bond that they're sharing with people, and this affects them lifetime. It is not something that happens once or twice. It goes on throughout their life if the issue is not addressed. So the parents need to be sensitized about it, and it is such a good way that you're conducting this, that it should reach to them that it exists in the society and we have to address the elephant in the room. Well said, ma'am. Very well said. And मैं एक बार आकांक्षा मैम से भी पूछना चाहूंगा. She is from Tara Foundation, and आपके पास शायद ऐसे केसेस बहुत आते होंगे जहाँ पे बच्चे जी. अपने घर के अंदर ही घुट रहे होंगे ऐसे इंसिडेंसेस की वजह से. जी, तो
तारा जो है वो बेसिकली एक चिल्ड्रन होम है। तो ये चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जिनको बोलते हैं, वो उनके लिए काम करता है। एंड दीज आर दोज चिल्ड्रन हु हैव फेस्ड और हैव सीन एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज हैपनिंग। तो उनके साथ भी होता है या उन्होंने किसी के साथ होते देखा है। सो एट अ वेरी यंग एज दे आर एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दीज। तो उस तरह के बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पहली चीज़ टू इवन बी अवेयर ऑफ द चाइल्ड्स फीलिंग। आप ये सारे पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों के साथ हैं, जो एनजीओज हैं, टू आइडेंटिफाई कि वो बच्चा कैसा था एंड हैज़ देयर बीन अ सडन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड और नॉट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर चाइल्ड। तो ये बहुत, क्योंकि इनिशियली एक बच्चा एकदम आके आपको नहीं बोलेगा कि मेरे साथ किसी ने कोई तरह का सेक्सुअल अब्यूज किया है। तो you have to be very aware of those signs in the child. And I think instead of them reaching out to us, we need to put that hand forward, reach out to them and ask them that this is what we are seeing, there's been a change, aap kya feel kar rahe ho. Give that space, build that trust so that the child can open up and easily. तो बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा खुद से आपके पास आके बोलता भी है कि मेरे साथ ये हुआ है, believe it. डू नॉट बी लाइक नहीं नहीं तुम क्या कह रहे हो, वो तो तुम्हारे पापा हैं, वो कैसे कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव व्हाट द विक्टिम इज टेलिंग यू। सो दैट इज माई एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग हियर। तो हमारे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे अब्यूज हुआ है एंड आवर फर्स्ट मोटिव इज टू मेक द चाइल्ड फील सेफ, सिक्योर एंड हम उसका जो भी वो कहता है वी completely believe the child. So I think that's a very important message for the parents, for everybody working with children, ki believe your child. All right, ma'am. So we have with us Jaspreet Kaur, and she has a question from all of us. Okay, Jaspreet, you can ask from us. Okay, so my question is that we often feel that sex education is not being taught in school at all. So, the kids have a subject called moral science in their earlier classes. So, if we accommodate sex education in that subject, will that help them? Absolutely, it is going to help. Okay, so Devyani ma'am, please share your views on this. I believe that the way we teach every subject according to the levels, according to the grades, we can imbibe all these things in our curriculum. फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसको उस तरीके से हम समझाएं चीजें, एंड द मोर द लेवल्स increases, the education about this is imparted more to the children. And it is very important because sometimes I see a child is sitting in the class and they are feeling shy about something and they don't know how to express it. So might be if sex education is introduced at a very beginning level, this issue might be more talked about in the school, and all these monsters that we see around us walking, the children would be able to identify them. Okay, so I do feel like जैसे 8th क्लास के अंदर चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वैसे ही शायद फर्स्ट क्लास से ही एनसीईआरटी को कोई ना कोई एक चैप्टर निकाल देना चाहिए जो कि हमें पूरे स्टेजेस पे मिले टिल 12th क्लास, जिससे हमें धीरे धीरे एजुकेशन मिले, बिगिनिंग फ्रॉम इनिशियल पार्ट देन गोइंग इनटू द डेप्थ्स। एक टॉपिक रेज करना चाहिए इसके ऊपर पूरा एनसीईआरटी के। Anyone else would like to share your views on this? एक और एक चीज़ ये है कि आजकल के टाइम पे इतना एक्सपोजर है ऑफ इंटरनेट एंड स्पेशली नाउ अभी कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो अगर सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इज़ ओनली थ्रू पेरेंट्स, थ्रू टीचर्स। तो बहुत ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी बाकी सब्जेक्ट्स और एकेडमिक्स को दी जाए। सही टाइम पे मिलना और सही टाइम पे। बिल्कुल यस सही, बिल्कुल। यस। मैं आप लोग के साथ एक थोड़ा अपना पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। आई वॉज इन क्लास 3rd, मेरे घर पे इंटरनेट बहुत जल्दी लग गया था, बट दिस इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। मैं थोड़ा स्पॉइल हो गया था उस चक्कर में, बिकॉज उस समय पे इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे इंटरनेट पे, सो आई वॉज समवेयर स्पॉइल्ड। बट on the later part, it was my parents and my friends who taught me about what is right, what was wrong, about the right thing which needs to be done by the society, about the right guidance which needs to be given by the society, your friends, your family. So कहीं ना कहीं मैं जहाँ पे स्पॉइल हो रहा था वो चीज़ मेरे घर वालों ने सुधारी, मेरे फ्रेंड ने सुधारी। So I request
each and every person in this society, चाहे वो कोई भी है, I know things होती हैं. Porn is spreading a huge impact on human minds. I think it is one of the measures. I think it is one of the things जो रेप कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि एक बंदा है, there is a person by the name of Salil. He has made a whole video on this topic. How is porn affecting the young minds? So I think उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ measures लेने चाहिए. Not even just internet providers, but even the society, your friends, your family, everyone should take a measure on this. Right. Okay, so next we have with us Hardik. What's your question? Nothing. I just wanted to say that yes, you are correct. I agree with you that porn is something that is happening around the world. So I wanted to say that main thing is that a child needs to get a proper sex education from school, from parents, from anywhere, because a male child actually what they do, they get sex education from internet, from porn or their friends, which is not right place to get that. They need to get education from their parents. Just Google it, you will find lots of pages which are guiding you to give education to your child. Totally agreed A with female child should know what a good or bad touch is, and a male child should know that there are certain things that a female won't like, which no one tells them. That's what I want to say. Totally agreed with you, buddy. Okay, so Josna ma'am, you'd like to have any questions from our guests? Shruti ma'am, one more question. What precautions, measures can a child take to avoid all this at his or her own level? What do you think? Ma'am, your mic is mute. Yeah. Sorry. Yeah. Yeah. Can you please repeat the question? Ma'am, what do you think? What precautions can a child take to avoid at his or her own level? I have already answers. I've given the answer. You have repeated the question. I guess. Okay. First thing is you have to expect respect and keep away from people who don't show you respect. One thing you should keep that in mind, right? I'm sorry. I thought you have asked this question earlier. So you have to expect that respect, you have been respected and you have to show that. Okay, so you have to be clear in your limits. आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने बोला हाँ तो हाँ, ना तो ना. So you have to take your own decisions to all the activities. You agree to some sexual activities and not to others. It depends. आपकी क्या एज है और किस चीज में आप okay हैं, right? You don't allow a person to touch you if it makes you uncomfortable, right? तो मैम, ये सबके साथ what do you think कि ये कहीं ना कहीं घर में ही अपने बच्चों को सिखाया जाए ना, ताकि ये ऐसी प्रॉब्लम बच्चे के साथ हो ही ना. बिल्कुल यही पॉइंट्स हैं कि आपको उनको यही चीजें सिखानी है कि उनको किस तरीके से रिएक्ट करना है. फॉर एग्जांपल टीनेज है बच्चे, पीपल गो इन अ पार्टी और समवेयर, तो आपको नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं. कभी कभी बच्चे आपको नहीं बताते हैं, राइट, इन दैट एज, इन दैट पर्टिकुलर एज. तो लेकिन बच्चों को ये चाहिए, क्या प्रिकॉशन बच्चों को लेनी चाहिए, एटलीस्ट अ पर्सन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और फैमिली, हुएवर दे थिंक द क्लोजेस्ट, उनको वो चीज जरूर किसी ना किसी को बता के जाएं. मतलब इन केस ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ बैकअप प्लान. इफ यू आर गोइंग आउट टू अ पार्टी इन अ डिफरेंट नेबरहुड और डिफरेंट प्लेस, you make sure that you trust someone knows where you are going. So it is a kind of thing, so you can call to come and get you a help if needed. In that case at least किसी को तो पता होगा. तो ये चीज बच्चों को प्रिकॉशनरी मेजर में हमेशा ध्यान को बता के जाएं. मतलब in case of it is a kind of backup plan if you are. Okay, so you trust someone knows where you are going. So it is a kind of thing, so you can call to come and get you a help if needed. In that. Right, like ma'am, Delhi police has introduced Himmat app.
Right, If right. you think that you are stuck somewhere, you can use that. राइट राइट डेफिनेटली बट आजकल मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक बच्चे पुलिस वालों पे भी इतना ज्यादा बिलीव करते हैं. ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं व्हेन दे आर द विक्टिमाइजिंग द पर्सन. तो उस केस में भी मैं ये कहूंगी कि अपनी फैमिली या जिसको आप ट्रस्ट करें उसको तो बताएं ही बताएं, बट डेफिनेटली वो आपके लिए एक बैकअप प्लान में जरूर है कि आप कॉल कर सकते हैं जो आपने ऐप बताया. एंड बिल्कुल मैम. you have to trust your instinct. अगर आपको लगता है something is fishy there, you have to leave there and then. Right. आप उस प्लेस पर ना रहें. That is the best precaution I guess you can take. Okay, ma'am. So we have with us Abhinav now. What's your question, bro? Hello, good evening to everyone. I wanted to say that till now we have addressed how a child should be discussing stuff with their parents, how they should be open in the society. But it's almost like saying that a city is being bombed and you want to build the armors as perfect as you can, but you don't want to address the situation of the origin of the bombs. So what I'm trying to say is how how should we address the sexual tension that a human being has. Our biology, we have certain biology and we have certain sexual tensions that needs to be addressed in some way in our society. So rather than understanding, okay, we should be open about this, how do we address that part of the thing? Akansha, ma'am, would you like to share your views on this? Sorry, I had some network issues. I could not get the No question. issues. Very briefly, if you could again repeat, please. Yeah, sure. So the thing is that Yeah. as a human beings, every human being has certain Yeah. biological needs. Every human being has certain, and the Hmm. society that we are living in and the makeup that we are living in, we are said, okay, you are bound to a certain partner, you cannot leave that, okay, and this is very unethical if you leave that partner. What happens if someone is sexually unsatisfied with someone and then if they leave them, then it's a taboo. If they address their sexual tensions with somebody else, then it's a taboo in our society. So then my question is, are we at that point where we are so much willing, okay, you are not sexually satisfied with me, okay, go ahead with someone else? And what is the reason that they have to maintain the secrecy and do this with somebody else forcefully? If the society makeup would be such that these interactions can happen elegantly and parents, people, wives, husband can accept sexual relationships in some other elegant way, in some other way which we can decide as a society, are we at that point? Are we like the sexual education? It's very much prevalent in societies such as USA, Finland, but still, per 100,000 people, the sexual assaults there, the sexual activities there that are assaults are much higher compared to India. You can just Google the statistics. Sexual education much more prevalent than India. Sexual assaults still high than India. So apparently that's not the solution that we have been talking till now. We need to look at what the source is. So what do you think about that? Okay, so ma'am, did you hear the question? Yeah, a bit. So look, like we all were discussing, I think it's important that we start talking about sex and sexuality. It's big because for a very long time, अगर हम अपने हिस्ट्री में भी देखें, if you see, ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे सेक्सुअलिटी और सेक्स की बातें नहीं होती थी. I think a lot of temples and many things, they have depictions of figurines and whatnot. But I think एक open discussion, एक acceptance that it's a very natural thing. जब इंसान उसको इस तरीके से देखे that this is a natural thing, I think तब धीरे धीरे इसके ऊपर लोग कंफर्टेबली बात करना शुरू कर पाएंगे. I All don't know right, what ma'am. other panelists feel about it, but personally I feel ये मेरा thought है. Abhinav, I just want to ask one thing. You said, sexual needs. You said the satisfaction word you use, Yes, ma'am. but we are talking about children who are Yes. below the age of 18 years. What Ma'am, are the sexual satisfactions they need at this tender age? Ma'am, I'm not talking again. I'm not talking about the children. I'm saying that okay, children are sexually abused, but who are they abused from?
I'm talking about the people who abuse them. So they're not abused with other children, they are abused with people who have certain sexual needs. I'm not trying to justify or demean the behavior, children or anything at all. I'm saying those Okay. who abuse them have certain sexual needs, they have certain biological needs that needs to be addressed as human beings. At what place are we in as a society to address that? According to me, I think the people who does actually who do these kind of heinous crimes are fickle minded people who are not, you know, Exactly. in their senses. They are very insensitive people. Unko kuch to, you know, they get some kind of pleasure or something out of these activities. These are the basic source जिनकी वजह से ये चीजें होती हैं. माइंड में ये चीजें हैं तो वो कहीं भी हो सकती हैं, वेदर इट इज इंडिया और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, टॉक अबाउट एनी कंट्री और एनीवेयर. तो वी कैन नॉट से आपने जैसे बोला कि सेक्स एजुकेशन वहां पर ज्यादा है, स्टिल द क्राइम रेट इज हायर. इट्स ऑल अबाउट इन द माइंड जो So ऐसे ma'am, how क्राइम do we When address that? when a Do we 1-year-old kill such child people is or what raped, do we do? I don't understand in any way that how come and you are over here talking about having multi partners. It's not at all related to the topic. If you're sexually unsatisfied with your partner, walk out of that relationship, marriage, and go and have it with somebody else. It is more about your morals and not about sex education. All right, so I think Abhinav, you have got your answer. Okay, Yes. so thanks for joining with us, bro. And I would like to raise some questions which audience are keep on asking. Okay, so the first question we have with us is from Rishi Lunia. Yeah, he's my senior from the college and he has a very good point of view. Okay, so he has this question that you are giving example of slums, but if you look in middle class or upper class, sometimes people try not to tell anyone. They're educated, but still, why do you think these kind of things are prevalent in our society? So we are somewhere restricted towards that. This is considered taboo among the poor class, but we aren't talking about the people who are living in the middle class or who are very rich, because cases do happen there also. So, what are your points of view on this? What I believe is it happens more in the affluent families because they have a bigger Exactly. reputation to hold, and Hmm. that is when they take the call very easily that let's not report it, let's just brush it off under the carpets and let's not talk about it. And here is the main problem that exists, that the children in those families, how are they ever going to come up and open about it? And might be they grow up and become a part of this whole system. Totally agree. Yes. Okay, then we have another question too. Okay, so I don't remember the name of that person, but he asked us that cinema is also spreading a great impact on the minds of children. So, what are your point of views on this? Well, see, I think we can't just blame one particular genre that cinema is doing it. I think there are many other things. But yes, I think we should be aware what is appropriate for a child to watch and see. And also, it's not just cinema. I think a child, हम सोचते हैं बहुत innocent है, क्या समझेगा, but दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट और वो आपके हर एक एक्शन, आपकी हर एक छोटी सी छोटी बात को ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, एंड आगे जाके वो उसी को इमिटेट करते हैं या बोलते हैं. सो आई थिंक just blaming cinema, maybe it could be, but there are many other things to it, I feel. I'm not just blaming cinema, but with that, Yeah. we have shifted a lot towards OTT platforms like Netflix, Amazon Prime, and I think that the amount of nudity and exposure the shows depict in those OTT platforms is too much in consideration with the cinema. So, what do you think about these OTT platforms? See, again, over here, I think we should be very watchful of what we are letting the children have access to. This is what हम जो children home में हम जब रहते हैं, we cannot do away with so हम बहुत एक family environment की तरह रहते हैं, and we give them access to a lot of things जो normal एक family परिवार में होता है. So I think we just need to take those very precautionary steps of what your child is watching, and be aware of it, and I think अगर आप एक open discussion रखोगे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, as soon as a child reaches a teenage, क्योंकि इतने जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी शेयर किया that a lot of
changes happen, hormonal changes होते हैं, आपके इतना peer pressure होता है. So I think it's important कि आप ये सब identify करके अपने बच्चे से इन सब चीज़ों के बारे में discuss जितना करेंगे, आई थिंक वो जितना भी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सपोजर मिलता है, ये होता है, आई थिंक वो सब चीजें, आई थिंक बच्चा आपके पास खुद आके ये सारी चीजें आपसे अपने आप शेयर करने लगेगा. सो घूम फिर के बात वही आती है दैट have that, give that space, give that platform for the child to talk to you and share. क्योंकि आधी चीजें मुझे अपना बचपन याद है, आधी चीजें मैं अपने माँ बाप को नहीं बताती आउट ऑफ फियर, बिकॉज मुझे कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि आप आके शेयर करो या हमसे बात करो इसके बारे में. So if we have that discussion, I think things would be fine. Okay, so now I'd like to ask you that what are the measures and preventions that we can take to remove this heinous crime of child abuse from our society? क्या actions हम लोग ले सकते हैं? One thing I would like to put forward is जैसे हम साइंस चेक करते हैं that एक जिस चाइल्ड जिसके साथ अब्यूज हुआ है, they definitely show certain signs. Similarly, the parents, they should always also watch for signs of the abusers that might be breeding in their houses. So at an early stage, even a small 15 or 16-year-old boy can, or a girl can show the signs of an abuser. So over here, the parents can play an active role in curbing it then and there and telling them that instead of again कि नहीं मेरे बच्चे ने कुछ नहीं करा है या मेरी बेटी ने कुछ नहीं करा है, even the signs of becoming an abuser should be noticed by the parents. All right, ma'am. Well said. Answer, ma'am. या जैसे मैम ने शेयर किया बिल्कुल, एंड जो हम डिस्कस किए जा रहे हैं दैट टेल द चाइल्ड व्हाट इज सेफ एंड अनसेफ, क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच, ये सारी चीज़ों के बारे में आई थिंक अगर आप जितना बच्चों को अवेयर कराओगे इट विल बी वेरी यूजफुल. And Shruti, ma'am, what would you like to say on the preventions और जो भी actions हम लोग ले सकते हैं against child abuse? Sorry, my internet connection got suspended. So क्या आपने discuss किया? I didn't hear at all. We were discussing about the prevention. So you said what are the precautions? Yes, ma'am. Can you hear I me guess now? you need to talk. Yeah. According to me, apart from giving sex education, you have to be a very good friend with your child. You have to talk and talk. Believe that is करवाने more के लिए important. जरूरत. That is more important. right. But I think if you are a best friend of your child, somehow कहीं ना कहीं ये चीज आपकी कहीं ना कहीं मैम अपने आप ही अर्ली स्टेज पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बच्चा आपके हो साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो आपको छोटी सी छोटी बात भी आके आपको बताएगा कि मम्मा Right, मेरे and साथ it- ये हुआ, इसने Yes, ऐसे किया, and उसने वैसे and किया. it happens with just one parent, either the mother or father. जिसके Either साथ the भी बच्चा father. ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है उसके Comfortable साथ they share. Exactly. बिल्कुल. Right. All right, Jyotsna, ma'am, any questions you'd like to ask? I think I'm okay with that. Anyone you want to ask something from Shruti ma'am can ask. Hello, pardon me, ma'am. कोई और कुछ पूछना चाहता है श्रुति मैम से? एनी क्वेश्चन किसी के दिमाग में इस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आप पूछना चाहते हैं तो. Audience में से अगर किसी को कोई अपना question raise करना है, you I can. have a question. Can I ask ma'am one thing? Yeah, for sure, ma'am. For sure. Ma'am, when I was working with the play school, we used to do these sheets where we used to put the picture of the child in between, and then we used to create 3 circles. One was the green one that they're supposed to trust. Second one is the orange one that they're supposed to trust less, and the last is the red one that they're not supposed to trust at all. But what I believe is that in real life, these circles don't work. Most of the abuse that we see or I hear from girls Right. of my class, boys of my class, they happen in the green circle. So how when you teach a child something like this in play school, that okay, this is a green circle, parents and your grandparents and your relatives, you're supposed to trust them. And when this whole dynamics does not work, how to help that child in that case? Because हमने उसे सिखा दिया कि circle को trust करना है.
अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसा कोई सर्कल अपने बेटे को हु इज जस्ट 6 year old, मैं उसको नहीं सिखाती हूँ. आई जस्ट फॉलो सर्टेन थिंग्स दैट to whoever you are comfortable with, you can go to that person in the family. I'm not talking about strangers at all, but घर की ही जो हम बात कर रहे हैं, if say his grandfather, his mama, chacha और मौसा जी, फूफा जी, whatever uncles, तो वो किसके पास जाना चाहता है और क्यों जाना चाह रहा है. कहीं ना कहीं से बच्चे को कुछ ना कुछ ब्राइब दे गेट कि बच्चा जा रहा है, या तो उसको मोबाइल फोन मिल रहा है, या मे बी दे आर गेटिंग सम चॉकलेट्स, टॉफीज. इतने छोटे एज में बच्चों को यही सारी चीजें होती है, जिस वजह से बच्चा या तो लव, केयर, कंसर्न की वजह से अट्रैक्ट होता है, या इन चीजों की वजह से होता है, या मे बी बोथ द कंबाइंड थिंग्स. तो अगर बच्चा इस चीजों में जा रहा है, आई जस्ट चेक ऑन द थिंग्स कि वो क्या कर रहा है, जिसके पास भी जा रहा है. मैं अगर ऐसे ही छोड़ नहीं देती बच्चे को जस्ट लाइक एज इट इज, मैं जस्ट चेक रखती हूँ कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा है. तो यू हैव टू, वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, यू हैव टू कीप चेक ऑन योर चाइल्ड. दैट्स व्हाट आई कैन से, बिकॉज ये टाइम ऐसा है, वी कैन नॉट से एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी. Thank you so much, ma'am. So I think at the end we can conclude कि सबसे बड़ा पार्ट, सबसे मेजर जो एक मेथड है इस चीज को खत्म करने का, वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं. पेरेंट्स प्ले द बिगेस्ट रोल इन दिस होल टॉपिक, एंड सेक्स एजुकेशन को भी एक अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स को दे देना स्टार्ट कर देना चाहिए. आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू. That's the conclusion. I totally agree. See, Shruti ma'am is also working, right? So आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि आपको अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों कैसे somehow मैनेज करनी है. बिल्कुल. राइट मैम? राइट. यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स. राइट मैम. तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के साथ उतना टाइम स्पेंड करो जितना टाइम स्पेंड आपको करना चाहिए. आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना टाइम दो बच्चों को, जो कि बहुत ही जरूरी है मैम आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से. एग्जैक्टली, यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. ऐसा नहीं है आपके लिए वर्क इज ओनली इम्पोर्टेंट. आपने कहते हैं ना, बच्चे को अगर आपने जन्म दिया है तो आपको देखना है भाई, उसको पालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है. जन्म देना बहुत आसान है, तो जब आप उसको पालते हैं तो उसकी छोटी से छोटी नीड, छोटी से छोटी चीजें उनका ध्यान रखते हैं. तो आपको देखना पड़ेगा वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है. तो इनिशियल लेवल से ही आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे. मतलब बच्चे को ये नहीं पता चलना चाहिए दैट आई एम कीपिंग अ चेक ऑन हिम और हर. वो पता चला तो बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज से पीछे हट जाएगा, या लगेगा कि मेरे पर एक नजर रखी जा रही है. लाइक कभी कभी जरूरी भी होता है, नजर रखनी बहुत जरूरी है, सो दैट कि हमें पता हो कि वो क्या ठीक कर रहा है और क्या गलत कर रहा है. राइट, वेरी राइट. Okay, so I think Rishi का एक और क्वेश्चन आया है. मैम, I have one question that if a child. Okay, so Rishi, if you can repeat the question, I wasn't able to read it to the end. Okay. Any question, Barbara? That if a child do an abuse to other child, not purposely, and others find it out, how should we deal with him or her? Because I don't think extreme measure is appropriate for that. Okay. So, ma'am, Shruti ma'am, आपको question visible आ रहा है ऋषि का? Yeah, I can see. But it is not that clear. Child do an abuse to other child. Okay, not purposefully and others find it out. How should we deal with him? I guess ऐसी चीजें स्कूल में ऐसे बहुत केसेस सुनने मिलते हैं, राइट? के और ज्यादातर क्या होता है, यंग चाइल्ड है, कोई एल्डर चाइल्ड जो है उसको अब्यूज करता है. मे बी दे हैव सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी टू नो द अदर जेंडर और मे बी द बॉडी पार्ट. तो कहीं ना कहीं बच्चों में कुछ क्यूरियोसिटी है, तो कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली वो ऐसी चीजें कर जाते हैं. तो दिस इज द टाइम वी हैव टू डू सेक्स एजुकेशन. ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से चाइल्ड इज डूइंग विद द चाइल्ड. अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू अग्री, ऐसी चीजें तब भी सामने आती हैं जब उनको एजुकेशन ही सही नहीं है. तो बच्चे तब करते हैं और एडल्ट तब करते हैं जब उनका माइंड ही ठीक ना हो. दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, फिकल माइंडेड पीपल. राइट. बच्चा बच्चे के साथ ऑफ कोर्स यही करेगा. उसको कुछ पर्पस ऐसा नहीं मिलेगा, या तो उसने इंटरनेट पे ऐसी चीजें देखी हैं, कहीं ना कहीं एक्सेस मिला है, एंड दे आर डूइंग practically, they want to pursue and practically do these things with other children. इसलिए वो ऐसा करते हैं, in the school, in the washroom, lobby, ऐसी जगहों पे बच्चे they are curious to know. Okay, so we have got one more question from Radhika Jha.
If you don't ask them at the right time, they won't share it with you at the most crucial point when they need you. Very well said. She has shared a point of view that if you don't ask them at the right time, they won't share it with you at the most crucial point when they need you. सो आई थिंक कई बार ऐसा होता है कि बच्चे राइट टाइम पे बात, जो इनके क्वेश्चन का मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है कि अगर हम उनसे सही टाइम पे नहीं पूछेंगे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और वो हमसे नहीं शेयर करेंगे, तो जब एक क्रूशियल पॉइंट आएगा, जब कुछ गलत होने वाला होगा, तब भी वो हमारे साथ बातें शेयर नहीं कर पाएंगे एंड उसके बाद रिजल्ट फिर पता ही होता है या हमें इट कि क्या हो हैपेंस, जाता है। इट हैपेंस, शेर आया झूठ होता है कई बिल्कुल बार, सही। हमने वो कहानी हाँ। बहुत बार सुनी है, और जब सच में शेर आता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। राइट, सो इफ चाइल्ड इज स्पीकिंग समथिंग, ऐसा हमारे साथ होता है, इवन इट हैपेंस विद मी। एक दो बार आई रियलाइज्ड इट कि मेरे बेटे ने मुझे कुछ कहा एंड यू नो आई इग्नोर्ड इट, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैं सुनूंगी बाद में सुनूंगी, तो दैट शुड नॉट बी डन। that I consider you know my fault, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। you know rather I should be listening to him more often whenever he's speaking something to me, तो I should lend my ear to him। वो मुझे बता रहा है and I am listening, तो उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा जिसकी वजह से आगे he can tell me further whatever secrets he's having in his mind। Okay, so we have with us last question for the day from Sana Srivastav. Do you think the child protection laws we have in our country are enough and fertile? Gani ma'am, Akansha ma'am. Yeah. I So had a word with a friend yesterday who's a judge, and he said the laws are really stringent. They are very strict about it. But the problem is the cases don't get reported. Due to financial issues, sometimes the parents take them back. And I saw this one case in front of me. The person was from a very affluent family. And the girl reported, the mother came, and he was immediately arrested at the POCSO. I don't, there's a law. And within a month, he was released. And I was very curious. So I asked some of their neighbors, and they said कि उन्होंने पैसे ले लिए उससे, आदमी से, and the case got closed. So we even have such scenarios where parents no longer want to take this forward. So even though the laws are strict, it is for us to keep on like going after them like anything. If somebody does like this, and bring the child to justice, because what I came to know is that they take the whole trial in a separate room where the child is never made to come face to face with the abuser. So the laws are good, but might be we don't follow them, or like we don't take up our cases very strongly, or don't even report them. Okay, very well said, yes. ma'am. Yeah, so I just want to put a point forward. Like you said, कि POCSO में case offense, जब कोई sexual offense होता है, that's registered under POCSO. And yes, जो laws हैं, I think it's necessary, it's needed, and जो बनाए गए हैं वो सही है। Implementation में आती है दिक्कत, because we ourselves fight for the cases, हम NGO होके, and I'll tell you there are cases which are pending for the past 7 years. We have not given up on them. So can you imagine वो एक trauma कितना एक family के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर होता है, जहाँ पे for past 7 years you are so children are called, and जैसे she shared कि एक vulnerable witness court होता है, so the victim is not face to face with the abuser, but that whole scenario and ओवरवेलमिंग होता है एक बच्चे के लिए। सो इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि इसको प्रायोरिटी दी जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए जितने भी केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। एंड आई थिंक फॉर दैट द सोशल जैसे एनजीओज हैं एंड ऑल द अथॉरिटीज, इफ वी ऑल कम टुगेदर एंड रियली पुश फॉर फास्ट ट्रैकिंग द केसेस। ऐसा कुछ होगा? What do you exactly think? मैंने You are already working with an NGO. अभी रिसेंटली हमने बहुत हाई कोर्ट और इन सब पे अप्रोच करके वी डिड, सो देयर वाज अ सिनेरियो जहाँ पे फास्ट ट्रैक कर दी गई थी, बट ड्यू टू द लॉकडाउन थिंग्स गॉट क्लोज्ड। बट आई थिंक एक बूंद बूंद से बनता है ना, कहते हैं वो एक ओशन। सो आई थिंक वी शुड नॉट स्टॉप आवर एफर्ट्स जस्ट बिकॉज होगा कि नहीं होगा। आई थिंक अगर हम कर सकते हैं देन व्हाई नॉट। सो आई थिंक वी शुड ऑल डू दैट। And Okay, yeah, ma'am. So I totally agree with you. जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, and अगर करना है हम सबको तो हम लोग करके रहेंगे. So this was our open live session for today. Okay, Shruti ma'am, please can you say it fast? I just want to raise one point. जितने stringent rules हैं
उतने स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी होने चाहिए। रूल्स बिल्कुल तो सही। बना दिए, जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो जब एक भी कड़ी सजा मिलती है उसके बाद किसी की हिम्मत ना हो वो क्राइम दोबारा करने की, ऐसे रूल्स होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो जब हम बच्चों को बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उसी तरह हमें क्रिमिनल्स को भी बोलना चाहिए कि उनको सिर्फ बातों से नहीं, लातों से सिखाओ। Okay, so this was our open live session for today, Awaz, and I loved it. Okay, so thanks all the guests for joining us, Ms. Devyani ma'am, Ms. Akansha ma'am, Ms. Shruti ma'am, and Dr. Namita. Thanks a lot for being a Thank part you. of this event. Thank And you. thanks a lot Thank to all our and thanks a lot to all our audiences for such a lovely support. And we'll be back next Saturday with a new webinar on another major topic of the society. Till then, stay tuned and keep watching us. Thank you.